We're ready to go. Drop a message there. Please go. Hello everyone. Those of you who are live, am I audible to you? Any one of you who is live, could you tell me if I am audible to you? Hi Aradhana, how are you doing? Aradhana, can you see the screen also? Hi Rohan, how are you doing? Let us wait for others to join in. Hi Darshana, how are you doing? I'm doing good. I'm doing good. So I suppose we were discussing last week, we were discussing about percentage, and I would like you to solve more problems on percentage. And there is one particular topic that you and I need to discuss, because this is something that is very important for CSAT examination. So read this problem and tell me if you can solve this problem without picking up your pen. Can we solve this one without picking up the pen? The price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%. What will be the change in the expenditure on the commodity? What do you think is the answer here? The price of commodity Anybody? It says last time you might have done AB formula, isn't it? So what was AB formula? AB formula was applicable for two successive percentage changes, isn't it? And what was that? A plus B
plus AB upon 100. That was the very first thing that you learned last week. And the second thing that you learned over there was, if you increase, the sign will have to be positive. If you decrease, the sign will have to be negative. And if you remember, probably I told you the third thing. And what was that third thing? You can apply AB formula in such a situation where two variables are getting multiplied and you're getting the third variable. So we did very extensive problems about area equals to L into B, isn't it? So area is equal to L into B. This is what we did there now. And if that is the situation, can we utilize this particular concept out here also? Yes, we can do that. It says that price of a commodity is decreased by 40%. So amount can be written as, what is amount? Amount is price into quantity. These are the two variables. If you take price, rupees per kg, isn't it? And quantity in kilogram, what can we do? Price increases by 20%. What is decreases by 20%. If the price decreases by 20% and the consumption increases by 20%. So one variable is in positive, the other is in the negative. So what is this? If you apply AB formula, minus 20 plus 20 and then minus 20 and plus 20 upon 100. So these two are gone for sure. These two are gone. What is the final answer that you're getting? You're getting 4% decrease. So this answer is coming out as 4%. And what do we mean by 4% out here? This one, option number B. So what did I say? Whenever you've got two variables and they're getting multiplied and they're getting the third variable, you can very easily apply AB formula. So if you apply this one in area volume problems, they are going to be very easy cakewalk. अब अगर आपको ये समझ में आता है, मैंने क्या बोला, ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. These are the three things that you need to understand, right? Go ahead and solve this problem. And you did it last week. You did it last week. Population of a village first increases by 10% and then further decreases by 20%. By what percent population will change finally? What do you think is the answer out here? The question is, can you apply AB formula here? Can you apply AB formula in this particular problem? Can we apply AB formula out here? Whenever you have got successive percentage change, either वो बढ़ रहा है or it is decreasing, in both of the situations, जब भी सक्सेसिव चेंज हो परसेंटेज, आप AB फॉर्मूला आंख मूंद के लगा सकते हो, isn't it? So population of a village first increases by 10%, so your A is going to be what? Plus 10, isn't it? And what is going to be the value of B? It is going to be minus 20. So the answer will have to be plus 10 and then minus 20 as per the AB formula. As of now, I'm kind of discussing only AB formula, nothing else. So if you simplify this thing, minus 10 minus 2, what is going to be the final decrement out here? The population is going to decrease by 12%. Rohan is getting the right answer. Darshana is getting the right answer, isn't it? One particular scenario, आप कॉमन सेंस से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दो. जैसे पॉपुलेशन ले लो गांव की, कितनी 100 ले लो, and then it decreases by 10%. So what is going to be 10% of 100? It is very simple. It is coming out as 10. अब इसमें आपने 10 ऐड कर दिया, isn't it? 10 ऐड करने के बाद में आपने क्या फर्दर करना है? You have to decrease it by 20%. So 20% of this value. Now do the mental calculation. 10% of this value will be 11. What is going to be 20%? 11 into 2, which is going to be what? 22. अब आपने अगर इसमें से 22 subtract किया, तो what is that you are having? You are having 88. यहाँ से यहाँ, what is going to be the net change? Population finally 12% से कम हो रहा है, यही हो रहा है ना भाई वहाँ पे. So either you apply AB formula or you do this thing. It's okay. But then you need to understand that where you should be applying AB formula. वहाँ जहाँ पे भी दो variable multiply हो जाए, आप AB formula use कर दो. Before we discuss anything else, can you answer this problem? If I ask you, distance is equal to what? Speed into time. Distance is speed into time, and I say that
if a driver increases the speed by 10% and increases the time by 20%, by what percent distance will increase? किसी भी ट्रेन का ड्राइवर है, मान लो उसने क्या किया, अपने स्पीड को भी 10% से बढ़ा दिया और जो ट्रैवल टाइम है उसको 20% से बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मोर. सो माय क्वेश्चन टू यू इज बाय व्हाट परसेंट distance is going to increase? By what percent distance is going to increase? So it's pretty simple for you to identify. What did I say? Whenever you're multiplying variables, SB variable, TB variable, जब भी आप दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे, आप बड़ी आसानी से क्या कह सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी 10% प्लस 20% plus 10 into 20 upon 100. And whenever you are applying AB formula, all that you have to focus upon, आप ये देख लो कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Is this okay? Is this okay, everybody? Go in the comment section and tell me if you're understanding this thing. Did you understand this particular problem? What did I say? I applied AB formula in area is equal to L into B, and then I also applied in distance is equal to speed into time, and then I also applied in the amount equals to price into quantity. Whenever two variables are getting multiplied, I will have to simplify my problems by using AB formula. काम simple हो गया, ठीक है. चलो जी, now let us go ahead and try to understand this particular thing out here, the consumption of multiplying not the consumption, it is the concept of multiplying factors. अब इसमें करने के पहले ना, I just want you to solve this particular problem so that we can develop our theory based on this particular problem. करके देखो आप, ये प्रॉब्लम आपसे बन रहा है क्या? Can we do this problem? Hello Muskan. I guess Muskan joined late or what? And Ifat, did you also join late? What is happening with you people today? Solve this problem, people. Solve this particular problem. A spends 10% of his salary on food. It's a pretty simple problem to solve. 20% of the rest on loan. Take your time. Rohan is getting the right answer. Who else is getting the right answer out here, people? And you need to understand, I have written two problems out here. How my second problem is different than that of the first problem. What is the first problem? A spends 10% of his salary on food, and then he is spending or she is spending 20% of the rest. It is 20% of the rest. It is not of the original amount. It is not of the original salary, isn't it? जो बच गया उसका 20% वो खत्म कर रहा है, and then 25% of the rest on education. तो जो बच गया उसका further 25% किस पे खर्च होगा? Education पे खर्च होगा. Now the person is left with rupees 5,400. The question is, what was the salary? That's one problem. मेरा सेकंड प्रॉब्लम है 10% on food, 20% on loan and 25% on education. This is happening on the same value which is salary. यही है ना, ये जो आप खर्च कर रहे हो ये आप सैलरी पे खर्च कर रहे हो. तो अगर आपने ये सैलरी पे खर्च करना है 10% and then 20% and then 25%, you might say that okay, 55% gone. So what is that we are left with? We are left with 45%. 45% of salary is given to you as 5,400, and you find out what is your salary. I suppose the answer will come out as 12,000. But that's not your problem. कई सारे लोग ये गड़बड़ करेंगे यहाँ पे. आपसे प्रॉब्लम क्या पूछा जा रहा है? आपसे तो ये वाला प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, isn't it? So what is one
one method that we should be applying to simplify these kind of problems. Just a second. Just a second. Understand this thing. If I have to solve this problem by using common sense, किसने solve किया अभी तक? किसने solve किया? मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ रोहन का आंसर आया है. So let us say that salary of a person is 100 rupees, है ना जी? Salary is 100 rupees and the person is spending 10% of 100 rupees. So what is going to be our 10% of 100 rupees? It is 90 rupees. आपने खर्च कर दिया 10% and then 90 rupees is left, and then problem is asking you to spend 20%, isn't it? And if the problem is asking you to spend 20% of what value? 90 का 20% कितना होगा? 10% is 9, so 20% is 18 आपने खर्च कर दिया, बच कितना गया? 72 rupees. So that's from here to here it is decreasing by 10%. From here to here it is decreasing by 20%, and then further problem tells you that it is decreasing by 25%. What is 25%? 25% is 1/4, isn't it? Of 72, which is 18 अगर आपने subtract किया तो what is that you're left with? 54 rupees. So what is the analysis? Had the salary been 100, the person would have left with rupees 54, isn't it? But problem आपसे क्या बोल रहा है? Problem बोल रहा है कि भाई देखो ये जो सैलरी है ना, सब कुछ करने के बाद वो बची है 5400. And if it is the case, what do you think it is? This is 100, further 2 zeros. What is the value? 10,000. That's one method to simplify our problem. Let me know in the comment section if you're understanding this method. What did I say? This is one of the best methods to simplify the problem, commonsensical method. But the question is, will you apply this in your examination? एक तो ये तरीका हो गया प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का. दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का? Let us understand. What did I tell you? I can apply AB formula also. What is AB formula? First there is a decrement of 10% and then further there is a decrement of 20%. यही ना? Further there is a decrement of 20% और finally ये कितने परसेंट से कम हो रहा है? 25% से कम हो रहा है. So what is that I should be doing here? I can apply AB formula इन दोनों में, क्योंकि AB formula आपने कितने में यूज करना सीखा है? 2 में यूज करना. आपने इसमें यूज किया तो आपको मिलेगा 28% नेगेटिव. प्लीज डू इट फॉर योरसेल्फ. एंड इफ यू गेट 28% विद दिस, आप क्या कर दो? इसके साथ में उसको अप्लाई कर दो. सो दिस इज -28 एंड देन -25. -28. Now you see, you have to write it down. एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इतना पेशेंस हमारे पास में ना हो कि हम इतना कुछ लिखें, isn't it? So this is 1/4, this is +7. What is this? -46%. So the entire salary is getting down by 46%. ठीक है. अब अगर 46% से ये कम हुआ तो आपके पास में बचा कितना? 54%. भाई 46% सैलरी का चला गया. So what is that we are left with? We are left with 54%. 54% of salary, which is given to you as 5,400 rupees. And if 54% of salary is 5,400, can you simplify what is the salary out here? 54 upon 100 into S, that is 5,400. And this value is what? 100. Salary is 100 into 100 and that is 10,000. I understand. ये problem बन तो गया इससे, but I would never advise you to utilize this particular methodology to simplify your problem in the examination. क्योंकि अगर 4 चेंज हो गया फिर आप क्या करोगे? हर बार AB फॉर्मूला 2 बार लिखते जाओगे. That is going to take some space, that's going to take time, that's going to take effort. मैं तो कहूंगा कि ये तरीका सही नहीं हुआ. AB फॉर्मूला कहाँ पे सही हुआ? 2 जगहों पे सही हुआ. यही है ना भाई? और अगर AB फॉर्मूला 2 जगहों पे सही हुआ तो what is the method that I am talking about? ध्यान से देखना. The method that I am going to talk about. Now I need your support over here. If there is a value X, if you increase X by 20%,
or maybe you decrease it by 20%. आज क्या है, ग्रुप में इतनी हलचल है नहीं है, कितने आज ये बच्चे रह कहाँ गए, कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुई क्या? Okay, now see this. If x is increasing by 20%, if you understand this, you're going to understand everything. अब अगर x को 20% से बढ़ाया तो don't you think this is going to be what? 120% of x? And if you decrease 20%, do not you think this is going to be what? 80% of x? Does this make sense to you? So what is 120% of x? And you understand how do you write 120% of x? It is 120 divided by 100 upon x. And how about this one? How about this one out here? It is going to be what? 80 divided by 100 into x. मैं कह रहा हूं बाकी की चीज हम करेंगे ही नहीं. The moment we understand that x is gonna increase by some certain percentage, उसी को हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे. X is increasing by 10%. What is going to be the final value? 100 plus 10. It is 110 divided by 100x. बाद में आप इसको simplify करो. If x is increasing by 20%, then what is that you should be doing? 100 plus 20, which is 120. What is going to be the final value? What is final value? Original value plus change, final value. मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को, अगर हमें समझ जाए तो. If you increase something by 30%, it is 130 by x. Whereas if you try to decrease something by, if you try to decrease something by 10%, अगर आपने 10% से decrease किया तो don't you think this is going to be what? 90 upon 100. If you decrease something by 20%, it is going to be what? 80 divided by 100. And if you decrease something by 30%, this value is going to be 70 by 100x. That is one thing, and I hope that you understand this one. Prisha, we can take any value of x को कुछ भी ले लो ना. X is a variable as of now. I do not know what is the value of x, but I know for sure that if x is increasing by 20%, what is the final value? What is the final value? How do we find out final value? I say, if you have to do it mathematically, this is what you're gonna do. You will say that, okay, x plus 20% of x. Then you will simplify. Then okay, x plus 20 divided by 100x. And if you further simplify this, don't you think this is going to be what? If we take x common, 1 plus 20 by 100. And if you do the further calculation, don't you think that you are getting 120 by 100? मैं कह रहा हूँ ये सारी calculation हम करें क्यों? Why do we have to do this much calculation? We do not want to do this calculation. All that I'm telling you, if it is increasing, in the numerator you have to add. If it is decreasing, then in the numerator you have to subtract from 100. And the denominator any which way is going to be 100. Does this make sense to you? Now, another thing. If I say that x is increasing by 10%, and that's why I said that you have to give me 5 minutes. आप 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ जाओगे, बट वो 5 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन आपका देना चाहिए यहाँ पे. x is increasing by 20%, and then further it is increasing by, and then further it is increasing by 20%. Make sense? What did I say? There is a value, it is increasing by 10%, and then further it is increasing by 20%. So what is going to be the final value? What is going to be the final value? And I said I don't have not find final value. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है यहाँ पे? Understand this. You got x, all right? X is increasing by 10%. What is that you should be writing? 110 divided by 100. Prisha, I suppose that you were not there in the last class, right? Last class we started percentage.
So you need to watch video number 4 of this series. If x is increasing by 10%, the value becomes 110 upon 100, and then it is increasing by 20%. So 20% बढ़ेगा किसका भाई? इसी का बढ़ेगा ना. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप सिंपली लिख दो इसको 120 by 100. Can you do this in one line? Yes, we can do this in one line, right? अब अगर आपको ये चीज समझ में आती है, I'm gonna use this particular concept in 3-4 problems that are coming now. So what did I say? What did I say? Let us summarize this thing. It says that if x is increasing by 10%, then it is going to be 110 divided by 100x. Further, you can write this as 11 by 10x. If it is decreasing, you can write it down as 90 by 100x. Similarly, you can do for 20 and then 25 and then, so this 23 will be written as what? 123 divided by 100x. Whereas this will be 77 divided by 100x. Does this make sense to you all? Now, I'm gonna use this in this particular problem. How I am going to be utilizing it here. Where did my problem go? This is my problem. And I would like to, what did I say? One method was, I tried to simplify this problem by using 2 methods now. One was the commonsensical method, जो common sense सबके पास में होता नहीं है. यही है ना भाई? और एग्जामिनेशन में तो हमारे पास में बिल्कुल नहीं होता, because with each and every calculation we keep doubting our own abilities. यही है. तो बहुत सिंपल अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को सेल्फ डाउट होगा कि क्या प्रॉब्लम सच में इतना सिंपल है या इसको ये मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं. तो वन वाज द कॉमनसेंसिकल मेथड which you can do. The second, the AB formula method, which I say that AB formula method should be applied only in 2 percentile changes. Third हुआ तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा. जैसे ही आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, advisable नहीं है. What is the third method? And I say that okay, now since I have understood what is the concept of multiplying factors, आप क्या करो यहाँ पे? You take the salary as x. Do you understand this? You take the salary as x. अब आपने सैलरी का 10% खर्च कर दिया. So what is that you're left with? 90%. So I'm going to write this as 90 divided by 100. I hope you're understanding this. And then problem tells me that 20% of the rest. What is this rest value over here? This value is the rest value that is left after spending 10%. वो बोलता है कि 20% आप लोन पे खर्च कर दो. तो 20% खत्म किसका होगा भाई? इसका होगा ना 20%. और अगर 20% खत्म हुआ, what is that you're left with? 80%. So I'm going to write this as 80%. So 80% is what? 80 by 100. Is that okay? And then problem tells you 25% of the rest. What is the rest amount? This one. And 25% is spent. What is that we are left with? 75%. Now this is the salary that we are left with. And as per the problem, this value is 5,400. Do not you think this is very simple? Do not you think this is way too simple? What did I say? The entire concept of percent आपने एक लाइन में सिंप्लीफाई कर दिया इसको, है ना भाई? अब आपके पास में बचा क्या? सिर्फ कैलकुलेशन बचा. You can write this out. This is 3 by 4 and then this value is 4 by 5 and this value is 9 by 10 and this comes out as 5,400. 4 and 4 are gone. What is that? We are left with 27 by 50x is equal to 5,400. And if we try to simplify this, what is the answer that we are going to get? Tell me which method is better. Which method is better? So 5,400, this value becomes 50 upon 27, 27,200, and the salary comes out as 10,000. And in this method, you need to appreciate that अगर एक और कोई percentile change देता ना, आप वहां पे एक और value लिख देते. इससे ज़्यादा तो क्या ही होता? इससे ज़्यादा क्या ही होता? Are we okay with this method? I want you to understand this. I want you to take a pause. I want you to utilize this method in your examination because ये होगा, आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है problem ऐसे ही. चलो जी. And if you understand this thing, go and utilize this particular concept in this one, in this problem. Do it. A milkman
replaces 20% milk from a container full of pure milk and replaces this with water. बेईमान आदमी है ये, दूध वाला है ना भाई। और ये क्या कर रहा है, ये 20% रिप्लेस कर रहा है। एंड ही डज दिस 2 more times, यानी every time he is taking out 20% and then replacing this with water. यही हो रहा है ना। Find the concentration of water in the final mixture of milk and water. Please do this. Please do this. If you have understood the method, please go ahead and try to simplify this problem out here. Take 30-40 seconds, people. And let me know in the comment section if you're understanding the concept of multiplying factors. At the same time, I need you to understand this particular problem. What is the answer? What is the answer out here? A milkman replaces 20% of milk from a container full of pure milk. And if somebody is getting 40% as an answer, please don't do that. Please don't do that. 40% तो आंसर नहीं आएगा, यही है ना भाई। What is the answer, people? So that is what we can do. That is how we can simplify this problem. आप मान लो कि आपके cask में it is 100 liters of milk, ठीक है? And if you take 100 liters of milk, initially you have got 100 liters of pure milk, and then how much water do you have? You have got 0 liter water. And the problem tells you that 20% is taken out. So 20% of pure milk will be taken out. What is that you're left with? 80 liters. Milk to gaya, 20 liters. And what is that you're replacing this with? 20 liters. So what is the water? Water out here is 20 liter. Now, if you further, so this is your first replacement. And if you try to do the second replacement, as of now, milk and water, they are in the ratio of 80:20, which is 4:1. We have not done ratio classes, which will be either in the next week, but I am assuming that you're understanding this basic calculation, 80:20. तो जो भी आप करोगे, 4/5 of that will be milk. जब आप 20 लीटर फर्दर निकालोगे तो उसमें से कुछ मिल्क भी निकल के आएगा और कुछ पानी भी निकल के आएगा, यही है ना कहानी। मिल्क निकल के आया कितना? 4/5। अरे 4/5 मैंने कहां से निकाल दिया? 4 divided by 4 plus 1. That is what is the value of 4/5 of 20. And how much is going to be water? Water is going to be 1/5 of 20. And if you simplify this, 16 liters milk and 4 liters of water will come out in the second replacement. And if you do so, 16 is gone out of 80. What is that you're left with? You're left with 64 liters. How much is water you're having? 16 liters. क्योंकि आपने 4 लीटर तो गया. अब what is happening? 20% you're adding water into this. चलो जी 20 इसमें water add कर दिया. Every time you understand, volume is going to be constant. भाई volume जितना हमने शुरू में लिया हुआ था उतना ही होगा. We took it as 100. You see 80 plus 20 100, 64 plus 36 100.
Now is going to be the third replacement. This is your second replacement. What would you do in the third replacement? In the case of third replacement, what color I should choose? I don't know. What is the ratio of milk and water? As of now, the ratio is 64 is milk and 36 water. So what is the value out here? So this is gonna be what? 9 into 4 and 16 into 4. So what is the ratio of milk and water? It is 16:9. अब मैं एक प्रॉब्लम कर तो रहा हूँ बड़े लंबे तरीके से. तो 16/16 plus 9, 25th will be milk and 9 by divided by, ऐसे ही लोग करेंगे जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना प्रॉब्लम. Majority of the people would try to simplify this problem by using this method only. ये करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप गड़बड़ करोगे कहाँ पे. So 20. What is the milk? So this is 5, this is 4, this is 64 by 5. What is this? 12.8 liters will be milk that will come out, and obviously if you simplify this is 7.2 liters water will come out. और अगर ऐसा हुआ over here, so what do you think is the quantity of milk? 64 minus 12.8, and this value will be coming out as what? 51.2 liters. So out of such three replacements, 51.2 liters will be the milk, and how much is going to be the water? जो भाई milk नहीं है, that is the water. अब water हो जाएगा 48.8 liters. अब इतनी मेहनत हमने करी, चलो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसका आंसर कुछ बनता है कि नहीं बनता है. And what is that they are asking you? They are asking you find the concentration of water in the final mixture. What is the concentration of water in the final mixture? It is 48.8%. But do you have to simplify by using this method? I don't think so. I don't think so. कितने लोगों को ये मेथड समझ में आया? Go in the comment section and tell me how many of you are actually understanding what I am talking about. Even if it is very long method, even if it is very long method, हमारे को शॉर्टकट समझने के लिए पहले लॉन्ग कट समझ में आना तो चाहिए ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे. What is my one-liner method? What is my one-liner method? What is one-liner method? देखो ना, मान लो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है 100%, ठीक है जी, 100% प्योर मिल्क. You are taking out 20%. Understand what I'm trying to say? You have taken out 20%. And if you take out 20%, what is that you are left with? You are left with 80%. 80% of milk, which is what? 80 divided by 100. Do you understand this? This is happening after first replacement. And if you simplify this value, you will be getting 80. आपने 80 तो आपको मिला था, पीछे था कहीं पे. And then what is that you're doing? You're taking out 20% again. तो जब आप 20% लेके बाहर आते हो, 20% उसमें से मिल्क भी होता है और 20% उसमें से वाटर भी होता है. तो वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली क्लियर इज, जो भी मिल्क बचा हुआ है 20% उसका बाहर निकल के आएगा. और अगर 20% उसका बाहर निकल के आएगा तो बचेगा कितना? 80/100. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, यहां पे जो आंसर मिल रहा था पहली बार, दिस आंसर वाज 80. And if you simplify this one, this answer is going to be 64. And that is what you were doing, isn't it? बड़ी मेहनत कर करके आप निकाल रहे थे. मैं इस वाले मेथड में क्या करूंगा? Third time, if my milk is 20% of the solution is being taken out, then 20% obviously milk will come out and 20% water will come out. तो जो ये milk बचा हुआ है इसका 20% तो निकल के आएगा ही आएगा. So what is that I'm gonna do? I'm gonna do this very simple analysis. Third time I'm gonna multiply 80/100. And if you understand this thing, if you simplify this, what is that you will be getting? You will be getting 51.2 liters. इतनी मेहनत हमने जो करी वो तो वेस्टेज था. फिर अगर हमारे को आंसर, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Let me know in the comment section. Let me know in the comment section if you're understanding what I'm talking about. What did I say? You got 100 liters. So which is 100 liters is 100%. आप इसको 100 लीटर ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है? Then you replace 20%. 20% गया तो बचा कितना? 80%. 80% का 80/100. Then further you are taking out 20%. तो जो मिल्क बचा उसका तो 20% निकल के जाएगा ही जाएगा.
and hence it is going to be 80% of the left. So 80/100 वापस कर दो, फर्दर 80/100 कर दो. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 100. यही तो होगा ना भाई, यही तो होगा. सिंप्लीफाई कर दो इसको. दिस इज कमिंग आउट एज 20, this is coming out as 4 into 4 16 256 divided by 5 and this one is coming out as 51.2. परसेंट बोल दो, लीटर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना. अब आपको ये अगर समझ में आ गया तो 100 minus 51.2 because they are not asking you how much is milk, rather they are asking you how much is the water. So this is coming out as what, 48.8%. क्या ये बात सबको समझ में आई? सो अब आप प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट समझने के बावजूद आप गलती कहां पे कर सकते हो. जैसे आपने प्रॉब्लम लगाना शुरू किया तो आपको जो बचेगा ना वो मिल्क बचेगा. आपका मिल्क बचेगा 51.2%. बट अब अगर प्रॉब्लम में पूछ लिया हाउ मच इज वाटर, तो वॉट एवर इज नॉट मिल्क इज वाटर, इजंट इट? सो 100% माइनस 51.2% इज गोइंग टू बी वाटर. तो अब वहां पे ऑप्शंस अगर आप देखो तो ये 51.2% है यहाँ पे, और कई सारे लोग ये गलती करके आएंगे. तो ये बोला जाता है कि प्रॉब्लम आपको जो लास्ट लाइन है वो इंटरप्रिटेशन भी समझ में आनी चाहिए, इजंट इट? तो बी की जगह पे व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इट इज गोइंग टू बी ए. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस वन पीपल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Go ahead and simplify this problem now. Go ahead and simplify this problem now. Good job, Ankit. I hope. Good job. Last one you understood, right? Muskan understood. Darshana understood. Who else? Who else? Raj, did you understand this? How about Raj? Did you understand this? Raj, how about you? Prisha, did you understand? Prisha, if you have understood this, try to utilize the same concept out here in this problem and try to simplify this in one line. आज ना सुबह से क्लास की कैंसिलेशन की वजह से बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who are not, who thought that this class got cancelled, whereas morning classes were cancelled. In an examination in which the full marks were 800, A gets 20% more than B, B gets 20% more than C, C gets 15% less than D. And if A got 576, how much D got? That is what they're asking you. How do you solve this problem in one line? Let the marks of D be X. और अगर वो X हो गया तो D is here, isn't it? D is here. Problem tells you that C gets 15% less than D. So what is 15% less? 85/100. So this is going to be 85/100. This is the marks that C has got. Problem says that B gets 20% more than C. This is what is for C. So 20% more. It is what? 120/100. So this is what is for B. देखो ना, प्रॉब्लम एक लाइन में सिंप्लीफाइड हो जाती है अगर आपने सच में कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया तो. And finally it says that A gets 20% more than B. 20% more than B. Don't you think this is 120/100?
अब एक नंबर किसका आ गया, ये नंबर आ गया ए का। अब ए ने कितना पाया 576. So can you find out how much D got? Can you find out how much D got? Is that okay? So this is going to be what? This is 6 by 5. This is 6 by 5. And this is 17 by 20. So this can be written as 5, then 3, and then 3. 5 and 5 and 5. 125. 17 into 9, 153. This x is equal to 576. What is the value of x? 576 into 125 divided by, I would say that 17 to 17 into 9. Simplify this. All that I'm trying to say, this is what you have to do. If you understand this particular line, rest of it is calculation. Who got the answer? Who got the answer out here? C. Rohan is getting C. So did I do the right calculation? 6565, 1720. Okay, that's fine. What is the percentage that they're asking you? How do you find out percentage? Percentage should be divided by, if it is 800 is the full marks, 800 and then 100 and then marks gotten by D. अब D के नंबर तो इतने सारे हैं यहाँ पे. So D के marks divided by 800 into 100. So this is what? जो भी marks है उसको 8 से divide कर दो, answer आ गया. So what is the value of percentage? The percentage should be 576 into 125 divided by 17 into 9 into 8. 8 से जाना चाहिए. 6 2 9. This is 8. This is 1000 upon 17%. Yes, the answer is C. Muskan is getting C, Darshana is getting C, Priyanka is getting. Priyanka, how come, bacha? Answer is C, right? 17 into 5. मैं कह रहा हूं करने की जरूरत भी नहीं है ना. ये कहां पे जाएगा? यहां पे जाना चाहिए. Are we understanding? In this particular problem, I am not concerned with how fast your calculation is. Rather, I am concerned with this particular line. If you understand this aspect of the problem, then I am pretty hopeful कि आप बाकी चीजें तो आप कर ही लोगे. और कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होगा ना कि कभी वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो तो आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहता है. जैसे आपके सी सेट में प्रॉब्लम पूछा गया हो, ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को सारे लोग. व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दिस. किसी गांव की पॉपुलेशन ले लो आप. पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज एक्स and it is decreasing by 10% every year. It is decreasing by 10% every year. Problem says after 4 years, find the population. After 4 years, find the population in terms of x. Please understand how this is going to be fantastically used, and this is what is asked in CSAT. The problem says that population of a village is x. Problem is not concerned with your solution part. Problem ये चाहता है कि आप conceptual clarity आप रख लो. वो कह रहा है कि x थी किसी गांव की population and it is decreasing by 10% every year. After 4 years, what is going to be population of the village in terms of x? Ankit, did you understand the last problem? Last problem, that line. If you still have not understood, we can do it on the Telegram group, right? Ankit, please let me know. If you still have not understood, I have made very detailed videos to make you understand. I will send you those videos, and if it is not there, I will make you understand once again in the Telegram, right?
देखो ना, पॉपुलेशन वो कह रहा है कि पहले थी x, फिर 10% कम हो गया 9/10। 9/10 कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस वैल्यू इज 4। बस यही ऑप्शन हो गया। देखो कैलकुलेशन हुई ही नहीं, प्रॉब्लम का ऑप्शन ही दे रहा है 9/10 रेज टू 4, और प्रॉब्लम का ऑप्शन आ गया 0.9:4 into x। सो व्हाट डज दिस मीन? प्रॉब्लम आपसे ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेशन कर दो, वो कह रहा है कि क्या आपको ये बात समझ में आती है क्या? And those of you who are saying 0.6561x, you guys are absolutely right. Aradhana, Muskan, Darshana. No, Darshana, please understand this. It is not going to be, it is 0.9 raised to 4. जितनी बार होगा, ये 4 बार हो गया तो 0.9 raised to 4 हो गया। 0.9 raised to अगर 5 बार बोलता तो 5 हो जाता। सिंपल हो जाता प्रॉब्लम हमारा। Let me know in the comment section, people, faster if you understand this particular problem. Go ahead and solve this one. अब आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड इन 2020 CSAT. व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? मेक इट फास्ट. What is the answer out here, people? Read the problem. Maybe you don't have to pick up your pen because you understood something in the last class, and on the basis of that it can be done in probably one line. Anchal, did you join abhi kya? I did not find any comment from you. Darshana, Muskan, Anchal, Aradhana. How about others, people? Darshana, no. Last time we understood this very simple concept, and the concept was the order does not matter provided the percentage changes are same, है ना? जिस वैल्यू से कर रहे हो 10% से बढ़ा के 10% से घटा दिया, and you do the vice versa, it does not make a difference. और यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है क्या? इतनी बड़ी प्रॉब्लम कहने के लिए प्रॉब्लम है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%. तो या तो आप पहले 10% डिस्काउंट दे दो, या तो आप बाद में 20% कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये ऑर्डर दे डू नॉट मैटर, एंड देन इट इज लेवी 10% ऑफ सर्विस टैक्स. तो आपको दिखेगा कैसा? देखो, अगर आपको इस मेथड से करना है, माय अजम्पशन इज आपको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए. मान लो कि आपके पास में कोई वैल्यू है x, यही है ना जी. सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100, and then 20% discount दिया तो this is going to be 80/100. Do you understand this? And then paying a service tax of 10% तो 10% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे it is going to be 110/100. That is your first option. What is your second option? Discount of 20%. So x is a value, 20% is what? 80/100, and then 10% discount, so 90/100. And then service tax 110/100. Don't you think these values are same? Don't you think these values are same? And how about the third one? Pay a service tax of 10% first. Pay कर दो ना service tax पहले 110/100. पहले x का इतना पे कर दो, and then successive discount of 20%, and then followed by 10%. मैं कह रहा हूँ ये करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए हमारे को पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ द ऑर्डर्स चेंज हो जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू जिन वैल्यूज के साथ आप परसेंटेज चेंजेस कर रहे हो वो सेम हो, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर. डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड मेजरली ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन? इट इज गोइंग टू बी डी. राइट? समझ में आया क्या?
No, this one is good. This one is good. This one is again asked in your एग्जामिनेशन. ये कहीं पूछा तो गया है आपके सी सेट में, मैंने लिखा नहीं है, बट कभी ना कभी किसी न किसी साल में ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया है. सो गो अहेड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. I have taken a very simple problem to make you understand how these kind of problems function. प्रॉफिट लॉस शुरू करना है भाई, जल्दी जल्दी करो. व्हाट इज आंसर? इन एन एरिया of the total people, 40% were women and 45% were coffee drinkers. Rohan is getting the answer. Good job. Who else? Who else? So you got men and you got women. 40% were female. So 60 will be men. 45% coffee drinkers. So coffee drinkers is going to be 45, isn't it? 1/3 of male are coffee drinkers. 1/3. So 20 people will be drinking coffee. So no coffee is going to be 40. कुछ ऐसा ही ना. और यहाँ पे coffee and then no coffee. What is going to be the number for no coffee? Because number is 45, the coffee drinkers, whereas 20 men are drinking coffee. So how many female are going to be drinking coffee? 25. And then what is that they are asking you? The number of female. Problem को simplify कर दिया उसने. 15 is not the answer. Darshana, please be careful. Aradhana, you're getting the right answer. Ankit, you're getting the right answer. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपने टोटल को 100 लिया तो प्रॉब्लम काम कर सकता है, यही है ना भाई. नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम आउट हियर. नाउ दिस वन इज गुड. दिस वन इज गुड. टेक योर टाइम and try to simplify the problem with this method only. In a company there are 75% skilled workers and remaining ones are unskilled. 80% of the skilled workers and 20% of the unskilled workers are permanent. दर्शना, नॉन कॉफी ड्रिंकर विमेन. देखो ना, आपसे वो कॉफी ड्रिंकर विमेन पूछ रहा है वो प्रॉब्लम में. दे नॉट आस्किंग यू नॉन कॉफी ड्रिंकर्स विमेन. दर्शना, नॉन कॉफी पूछा रोहन. देन द नंबर ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स. ओ, so female non coffee drinkers 15. The answer is going to be 15. My bad. No, I made a mistake. Darshana, Rohan, so sorry. The right answer is going to be 15. Yes, go ahead and simplify this problem, people. Thank you so much, Darshana, for bringing it to the notice. Simplify this problem. Take 30-40 seconds.
What is the answer? What is the answer? Somebody is getting 360. Ankit is getting 360. So how would I do this? I will take that total number of employees are 100. है ना? Total number of employees are 100. Then there are skilled and there are not skilled. I should be taking some other color. No? Skilled, 75% of workers are skilled. So 75% are skilled. So this value should be 75 and unskilled will be 25. And then you have got permanent and non-permanent. Permanent and non-permanent. That is what they have given you. How do you simplify the problems out here? Now it says that 80% of the skilled workers, 80% is what? 80% is 4 by 5. 4 by 5 of 75. If you simplify, this value will come out as 60. So how many of them are skilled? Permanent? 60 of them are permanent, right? Priyanka is also getting 360. Almost everybody is getting 360. So how many of them are non-permanent? 15. जैसा मेरा मेथड समझ देखो आप एक बार. अब इसमें क्या बोलता है? 25 में से 20% is 1 by 5. 1 by 5 of 25. 5 of them are permanent. So how many of them are non-permanent? 20 will be non-permanent. And as per the problem, the number of temporary workers is 126. This number out here is 126. मैंने क्या ब्लैक क्यों चूज किया भाई? This number is 126. No. Number of temporary is non-permanent, this and this. So 35. हमारे हिसाब से 35. ये बचपन वाला मेथड मैं यूज कर रहा हूं. अगर आपको याद हो, आपने बचपन में ऐसे ही किया होगा. हमारे हिसाब से नॉन परमानेंट कितने? 35. उनके हिसाब से कितने? 126. तो हमारा 35 उनके 126 के बराबर. तो R1 is equal to their 125 upon R100. हमारे तो टोटल हमने 100 लिया. 126 upon 35 into 100. If you simplify this, you will be having the answer. And that value is coming out as 360. And almost everybody has got the answer. Is this okay? Now, if you understand this thing, go ahead and try to simplify the next problem. Now, this was asked in UPSC CSAT 2020. Yes. Take your time, simplify this problem. This one is good. This one is good. This one is good. In adult population or of a city, not or a city, it is of a city, 40% men and 30% women are married. Almost everybody has got the right answer. Anybody in the class who did not understand the previous problem, please let me know. In the meantime, you are required to simplify this problem. Anybody who did not understand this, please ask. This was considered to be a good problem in UPSC CSAT.
So the number of married men and married women as per the problem, and these two are same. And 40% of men are married and 30% of women are married. So what do I have to do? I have to take a very convenient value जिसके हिसाब से मेरा ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए. तो मैं क्या लूं कि how many men are married? I will take this value as 30. How many women are married? I will take this value as 30. है ना? And this 30, and why did I take 30? I will let you know. And it says that 40% of men. So this is 40% of men. This has to be 30. And 30% of women. This value has to be 30. Can you find out the entire value? Can you find out the entire value? This is 2 by 5 of number of men. Men जब आप simplify करोगे ना आपका आएगा 75. What is going to be the total number of women? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. 30 is 30%. 30% is 30. So 100% is going to be 100. So what is going to be? What is the total population out here? Men है 75. How many women do we have? 175. Problem is asking you what is the percentage of married adult population. Married adult population यहाँ पे है कितना? 60, 30 men, 30 women, 60. And how many men? 75. And how many women? 100. In total, how many of them are there? 175. Into what is this percentage? 100. I am assuming that you are understanding what I am writing out here. So this one is coming out as what? This one is 4. This one is 7. This is 240 divided by 7%. 240 divided by 7. Your option is coming out as option number B. सारी कहानी अब ये हुई कि भाई आपने ये कैसे कर दिया. यही हुआ ना, क्योंकि प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना, पहले तो इस प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड करना, दैट्स अ जॉब. How many of you are understanding what is that I'm trying to do? What is that I'm trying to do? Even if I start with X, I would understand. I can find out the value. Even if I take the number of men as M, number of women as W, I still can find out the answer. 2 लाइन और लगेगा. अब मैंने ये 30 क्यों लिया, क्यों? अंडरस्टैंड दिस. यहां पे तो वो बोलता है ना कि 30% ऑफ अ पॉपुलेशन विल हैव टू बी, एंड दिस इज वेयर इट इज गोना हेल्प यू आउट. सो ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सेज 30% ऑफ women. So understand now, 3 by 10 of W is equal to number. So जो भी W is going to be number divided by 3 into 10. So all जो नंबर होना चाहिए ना, women का नंबर निकालने के लिए it has to be a multiple of 3. Do you understand this? तो मैंने क्या किया कि मेरा 3 का मल्टीपल तो मेरा फीमेल होना ही चाहिए, और मेल के लिए उसने क्या बोला था? इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 40% ऑफ men is equal to say so this is going to be what? 2 by 5 of men is equal to number. So number has to be number by 2 into 5. So 2 और 3 LCM अगर आपने करा है ना, 2 और 3 का LCM ले लो, which is what? 6. 6 का कोई भी मल्टीपल उठा लो यार, प्रॉब्लम बन जाएगा. आप 6 ले लो ना, आप 30 मत लो, 30 मत लो, 6 और 6 ले लो, काम चलेगा आपका. So what did I say? You can take 6, you can take 12, you can take 18, you can take 24, you can take 30. It has to be multiple of 2 and 3. Are we understanding this? Are we understanding this? Please let me know in the comment section. How am I taking convenient values? If I would not take convenient values, फिर भी मेरे आंसर आएंगे. बट मैं कह रहा हूँ कुछ नया चीज सीख लो, आप क्लास में बैठे हो तो. Okay then. चलो जी, I am done with percentage. परसेंटेज मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 3 प्रॉब्लम तो परसेंटेज के होंगे ही होंगे. So I thought that I should be putting all my energies. So you have got 3 ways to revise. 1, watch video number 4 and this video to understand the concept of percentage. Number 2,
go in the I'm gonna send you some 50 questions also, like the previous week I sent you 40 questions of LCM and HCF. आपको इस वीक 50 क्वेश्चन परसेंटेज के मिल जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस करो. You have got 10 videos of percentage which has been made only for you. रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग है, आप उनको देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से डेवलप हो जाएगी और आपस में ग्रुप में डिबेट करते जाओ, अपने डाउट्स पूछते जाओ, वहां से बन जाएगी. चलो जी, प्रॉफिट एंड लॉस. लेट आई जस्ट नीड 5 minutes ऑफ योर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा देयर आर 6 things that are involved. One is the cost price, the other is the selling price, and then you have got profit, and then you have got loss, and then you have got another is marked up price, and then there is something called discount also. Discount. It is denoted as CP, cost price, selling price, and then profit, then loss. This is known to be marked up price and this is known to be discount. चलो, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज हो गई. चलो, I'm gonna take a very simple case. कुछ ऐसा, चलो जी, मेरा पढ़ाने का बिजनेस अच्छा नहीं चला, मैंने पेन की दुकान खोल दी. ठीक है, अब जब मैंने पेन की दुकान खोल दी तो मैं पेन कहीं से खरीद के लाऊंगा, जहां से मैं खरीद के लाऊंगा और टोटल मेरे प्रेमाइसेस पे आने के बाद जो मेरी कॉस्टिंग होगी, दैट इज नॉट टू बी माय कॉस्ट प्राइस. टू मेक थिंग्स सिंपल, आई एम गोना अज्यूम दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन इज 100 rupees फॉर मी. राइट, महंगा पेन बेचता हूं मैं, सस्ता वाला पेन बेचता नहीं. मुस्कान जी, आपको लास्ट वाला प्रॉब्लम बाद में देख लेना. ठीक है जी. सेलिंग प्राइस, मेरा जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव था ना, दैट वाज 20%. मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए बिजनेस में, बिकॉज आई हैव गॉट सम अदर एक्सपेंडिचर्स टू टेक केयर ऑफ, एंड देन इफ आई डू नॉट मेक 20% प्रॉफिट, द बिजनेस इटसेल्फ इज नॉट वायबल फॉर मी. तो मैं कितने का बेचूंगा? मैं बेचूंगा 20% प्रॉफिट. किसका बनाऊंगा? कॉस्ट प्राइस का. अंडरस्टैंड दिस. 20% of this value is 20. So what is going to be my selling price? If customer walks into my shop and customer gives me 120 rupees, then I'm gonna make 20% profit of 100 rupees, which is my cost, and then I will be ending up making 20% profit. Right? ये तो बड़ा सिंपल सा ट्रांजैक्शन हुआ. बट मान लो कि दुकान में आप आ गए and you said that, sir, you remember that you had taught us once. मैं को फिर क्या करें अब इस बात का? तो बोले आप डिस्काउंट दो हमारे को. तो मैंने आई हैव टू ऑब्लाइज बिकॉज यू हैव बीन माय स्टूडेंट. तो मैंने कहा चलो जी आप डिस्काउंट ले जाओ. तो मैंने पूछा आप कितने का डिस्काउंट उम्मीद करते हो? आपने बोला 10% आप डिस्काउंट हमारे को दे दो. ये जो 10% डिस्काउंट होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आप 100 रुपीज पे मांगोगे या 120 रुपीज पे मांगोगे? यू आर गोना आस्क फॉर दिस डिस्काउंट on 200 rupees or 120 rupees, or in the other, if I rephrase the problem, आप कॉस्ट प्राइस पे मांगोगे या सेलिंग प्राइस पे? आपको तो कॉस्ट प्राइस मेरी पता ही नहीं है भाई. अगर मैं कॉस्ट प्राइस बता दूं ना कि देखो यार आप यू रिमेंबर 100 रुपया है, आप बोलोगे ये सर ये लो 101 रुपया, 1 रुपया ज्यादा दे दिया, वही आपका प्रॉफिट है. यही है ना. कस्टमर्स नेवर नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टू द शॉपकीपर. अब इस सिचुएशन में आपने मेरे से मांगा डिस्काउंट 10% का. 10% का डिस्काउंट आपने मांगा यहां पे 120 पे. अंडरस्टैंड दिस. और व्हाट इज 10% ऑफ 120? 120 का 10% हुआ 12. तो जो डिस्काउंट बना वो बना 12 रुपीज का. व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस? व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस? इट इज कमिंग आउट एज 108 रुपीज. क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने कितने का बेच दिया? 108 रुपीज का. And what is my profit percentage in this situation? It is only 8% because I am making 8 rupees profit onto the investment of 100 rupees. तो 8 का तो प्रॉफिट हुआ मेरे को. अब अगर प्रॉफिट मेरा 8 का हुआ और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव था 20%. I could have made 20% profit. So what is
understanding number one. It's a very plain and simple understanding. You make profit and loss. Profit and loss are calculated. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर को पता होता है. So profit and loss are calculated on the cost price and never ever done on the selling price. Please understand this thing. Never ever done on the selling price. And discounts are always offered on CP, on selling price, or maybe marked up price. ऐसे इसको मैं बोलूंगा selling price के जगह पे marked up price. So what is the difference between marked up price and selling price? I would say this: billing price is the selling price. Billing price is the selling price. जितने का बिलिंग होगा, जितना पैसा कस्टमर देगा, that is going to be selling price. And what is the marked up price? Marked up price is the price that the customer would see but would not pay. Customer would demand the discount onto the marked up price. आप मेरी शॉप में चल के आए, आपने देखा मैंने लेबल प्राइस कितना रखा हुआ है, मार्कड अप प्राइस कितना रखा हुआ है, 120 रुपीज. You're not willing to give me 120 rupees and you're demanding 10% discount. So that is marked up price. Then discounts are always calculated onto the marked up price क्योंकि कस्टमर को दिख वही रहा है ना, सिंपल बात. तो 108 रुपीज जो आपने निकाला था वो हुआ मेरा सेलिंग प्राइस, 120 क्या हुआ मेरा marked up price. So these are the 3-4 things that we need to understand. Profit and loss are always calculated onto the cost price and never ever onto the selling price. बच्चे इसी जगह पे गलती करके आते हैं. Now, since you understand this thing, how do you find out profit percentage? Profit percentage is always profit upon CP into 100. Loss percentage is loss upon CP into 100. Isn't it? And what is another very important thing? It is selling price is equal to cost price plus profit. And if this is the scenario, obviously selling price is more than that of the cost price. भाई अगर ज्यादा प्रॉफिट पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस तो बड़ा ही होगा ना कॉस्ट प्राइस से, और अगर गलती से घाटा हो गया तो इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. और क्योंकि आपने लॉस पे बेचा तो जितने का बेचोगे वो कम होना चाहिए आपका जितने का खरीदोगे. बनी बात हमारे को, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं. अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे पूछ दूं ना, इसी वाले में आप मेरी दुकान पे आए और मेरे को पता था कि आप मेरे से डिमांड करोगे डिस्काउंट का, बट मेरे को ये भी पता है that discounts are always the psychological benefits to the customers since they do not understand what is the cost price. आप कॉस्ट प्राइस अगर पता नहीं है तो मैं उसको कुछ भी प्राइस बोल दूं. कितने लोग दिल्ली में रहते हो भाई? कितने लोग दिल्ली में रहते हो? संदर्भ, when did you come? दिल्ली में ना मार्केट है, सरोजिनी नगर मार्केट है ना भाई. वहां पे जो जिस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग होती है ना वो बिल्कुल अलग लेवल पे होता है. आप जाओ, आप बोलोगे 1000 रुपीज का, कस्टमर शॉपकीपर ने बोल दिया, आप बोलते हो 100 रुपए में दे दो, फिर आप नेगोशिएट करना शुरू करते हो, फिर वो कहीं 200 रुपए में आपको दे देता है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. अगर आप मेरी दुकान पे आए और आपने बोला, मैंने बोला कि भाई कितने का, आपने मार्क्ड अप प्राइस, मैंने को नहीं बताना आपको कितना है मार्क्ड अप प्राइस, वही मेरे को निकालना है. अगर मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूं, अंडरस्टैंड दिस, आई हैव टू ऑब्लाइज बिकॉज यू हैव बीन माय स्टूडेंट, सो आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट. एंड देन 10% डिस्काउंट देने के बावजूद अगर मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाए तो फिर काम चल जाए. आप भी खुश क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, मैं भी खुश क्योंकि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो गया. यही है ना. अच्छा, किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एक प्रॉब्लम उम्मीद करो आप, है ना. सो विल बी सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स. आप मेरी दुकान पे आए और आपने बोला कि अमित सर व्हाई डोंट यू गिव अस द डिस्काउंट, एंड आई से दैट ले लो, कितना डिस्काउंट चाहिए. आपने बोला 10%, मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% ऑफ x which is coming out as x by 10 rupees. समझे आप. So what is my selling price? Selling price is
मार्क द प्राइस में से डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यही ना, मार्क द प्राइस इज x, x minus 10, दिस इज 9/10x रुपीज। और अगर यही 9/10x रुपीज अगर ये 120 हो जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं आपसे निकालना कितना चाहता हूं आपके पॉकेट से, 120 रुपीज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x is going to be what, this is 3, this is 40, the value of x comes out as 400 upon 3, और if you simplify this is 133 1/3, 133 1/3 और 133.33 रुपीज। मेरी दुकान पे आओगे तो मैं आपको 120 रुपए आप नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको 120 रुपए क्यों नहीं दिखाऊंगा भाई, मेरे को पता है कि मैं जितना बोलूंगा आप उसी के ऊपर 10% डिस्काउंट बोलोगे, तो मैंने दिखाया आपको 130। अब आप समझे कि डेसिमल्स में वैल्यूज मोस्टली क्यों होती हैं शॉप्स में। ये है, आपने दुकान पे आए, मैंने बोला ये रहा मेरा प्राइस, एक पेन की इतना दाम है, आपने बोला सर 10% डिस्काउंट दे दो, तो मैंने आपको इसका 10% कितना 13.33 रुपीज मैंने डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया 120 रुपीज। कितने का पेन था, 100 रुपए का। Am I making 20% profit? Yes. Are you making 10% discount? Yes. Are we both happy? Yes. Is it a win-win strategy? Yes. काम खत्म हो गया सबका, सारे लोग खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, बनी बात। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हमारे को समझ के रखनी है। चलो जी, what did I say? 3-4 things which must be absolutely clear. Profit and loss किस पे कैलकुलेट करोगे आप, कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पे। By selling an article for rupees 150, a man gains 25%. Find the cost price. Find the cost price. Simple problem, people. Simple problem. Do it. What do you think is the answer? In this case, selling price is 150. Profit percentage is 25%. They're asking you what is the CP. So selling price is equal to CP plus profit. Answer आया सबका? Almost everybody has got the answer. CP plus 25% of CP. So एक तो ये कैलकुलेशन जो आपको नहीं करना, मैं आपको दिखा तो रहा हूं, बट आप इस कैलकुलेशन को करेंगे नहीं एग्जामिनेशन में। दिस इज 5/4 CP is equal to selling price. So what is going to be cost price? Cost price is going to be 4/5 of selling price. यही हुआ ना? So 4/5 into 150, that is coming out as 120. एक तो ये सबने निकाला, किसने किसने निकाला? मुस्कान, राहुल, Debashish. Debashish, you joined very late today. What happened? Kunjan also joined very late. So this is going to be what? 4/5 into this 120. मैं कह रहा हूं कि इस कैलकुलेशन को वर्ड करके एक लाइन में हमको प्रॉब्लम कैसे लिखा जा सकता है। We can write this word, cost price, selling price is equal to cost price plus profit. मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस हुआ कितना, जो आज हमने लर्निंग ड्रॉ करी थी, वी कैन यूटिलाइज दिस। सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस 25%. So this collectively is 100 plus 25, it is 125%. 125 upon 100 into CP. सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज 5/4. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को यहीं पे लिख सकते थे। मैं हर बार प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हुए कहता हूं कि ये सब लाइन लिखना बेकार है एग्जाम में। Why to write this line? When you can do this in one line, आप न्यूमरेटर में जो बढ़ गया प्लस कर दो, घट गया तो माइनस कर दो, हो गया सिंपल। अच्छा, do this problem. At what profit percent must an article be sold so that by selling at half that price there is a loss of 30%? What do you think is the answer? Okay.
What do you think is the answer out here? Rohan is getting the right answer. Who else? Who else? Rahul is getting the right answer. Understand, people, understand. मैंने क्या किया? I just utilize that knowledge that loss is always onto the cost price. So I assume that my cost price out here is 100 rupees. Doesn't make a difference. Problem tells me at what profit percent must an article be sold so that by selling at half that price there is a loss of 30%. मैंने अगर सेलिंग प्राइस के आधे पे बेचा तो मेरे को 30% का लॉस होगा. 30% of 100 because loss is always calculated onto the cost price. तो ये बना कितना? 30 रुपीज का लॉस हो गया. और अगर 30 रुपीज का लॉस हो गया तो मैंने बेचा कितने का? 70 रुपीज का. 70 रुपीज का बेचेंगे तभी तो 30% का लॉस होगा. प्रॉब्लम क्या कहता है कि सेलिंग एट हाफ दैट प्राइस. सो हाफ दैट प्राइस अगर पहले हमने बेचा होता 140 का और बाद में बेचा होता उसके आधे पे विच इज 70, then there would have been loss of 30%. Do you understand what I'm saying? तो जब आपने 140 का बेचा तो प्रॉब्लम कह रहा है कि क्या प्रॉफिट परसेंटेज था. भाई 140 रुपीज का बेचा आपने. What is your cost price? Your cost price out here is 100 rupees. कितने प्रॉफिट पे बेचा आपने? 40 रुपीज पे. What is the profit percentage? 40%. प्रॉब्लम is simplified. Is everybody understanding this? Is everybody understanding this? आज तरुण भी काफी लेट ज्वाइन किया है. All right then, since you're understanding this, simplify this problem. There are 2-3 very basic points that I need you to understand. Do we have the Prisha in the classroom still or she's gone? Prisha, are you there? If the selling price of 24 rupees results in 20% discount on the list price, do we have a student whose name is Prisha out here? She's gone. Okay. If the selling price of 24 results in, so I would say that 80% of list price is equal to 24. So 80% is 4 by 5 of list price. List price is the marked up price. So what is list price? If you simplify this, it is coming out as 30 rupees. What selling price would result in 30% discount. 30% का डिस्काउंट किया तो कितना? 9 का डिस्काउंट किया तो कितना? 21. 21 is the right answer. अच्छा, Prisha is here. Prisha, did you understand this problem? Ankit, Tarun, Muskan, is everybody understanding this? How did I find out what is my
what is my list price or my marked up price? They both are the same thing. So 80% of list price is equal to 24. You can find out list price. List price is coming across 30. 30 का 30% is 9. 9 का discount दे दोगे 21 आएगा. Now before you solve this problem, 2 मिनट आप पहले बोर्ड पे देखो. अगर मैंने बोला ना कि if the cost price of 15 books is equal to selling price of 20 books, मैं इस प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से लगा सकता हूं. वो क्या रहा? Cost price, if I take cost price of one book is equal to 1 rupee. ठीक है जी. What is going to be CP of 15 books? That will be 15 rupees. ये तो कैलकुलेशन करना सिंपल है आपके लिए. And that is going to be equal to selling price of 20. So 20 books का selling price is 15 rupees. What is selling price of one book? Selling price of one book is going to be 15 upon 20, which is 3/4 rupees. 3/4 rupees को अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा? 75 पैसा. इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना. एक बुक खरीदी कितने की? 100 पैसा की. बेच कितने की दी? 75 की. कितने का नुकसान हो गया? 25%. Everybody is understanding this thing. There is another way to simplify this problem. Understand? Cost price of 15 items is equal to selling price of 20 items. Understand this thing. What did I say? Cost price of 15 items is equal to selling price of 20 items. Can we simplify this? Yeah, it is 3 and it is 4. So 3 times of cost price. And now you know that if you have to find out either profit percent or loss percent, selling price का तो उसमें काम है ही नहीं, क्योंकि profit या loss जब भी आप calculate करते हो, it is always onto the cost price. So 4 times, since there is a loss, it is going to be CP minus loss. And if we simplify this further, what are we going to be having here? 3 times of cost price is equal to 4 times of CP minus 4 times of loss. 4 times of loss is equal to CP. What is loss? 1/4 of CP. 1/4 of CP मतलब समझते गए होगे आप. 1/4 अगर CP का ही लॉस निकालना है, 1/4 is equal to 25%. काम हमारा खत्म हो गया. Right? Is it understood by everybody? Solve this problem, people. Solve this problem out here. If you understand what did I say in the previous problem, it is going to be very simple for you to simplify this problem in one line. And what is that? And what is that? Tarun, where were you, by the way, today? Vishal Singh. Vishal, have you been my student? Or is it your first class out here? Rohan is a consistent student, जो हर एक क्वेश्चन का ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के आंसर दे ही रहे. Vishal, this is our 5th class of CSAT, and if you're interested, please join this Telegram group, Amit Kumar Jaiswal. If you search this on Telegram, you will find this, and this is where we make all the announcements related to this class. And there are 4 classes that have already been live streamed, so there is a playlist. You can go and you watch all the videos, right? Okay, then what is the answer, people, of this problem? What is the answer? By selling 100 pencils, a shopkeeper is gaining selling price of 20. मैं कह रहा हूँ कि इस पेन में, इस क्वेश्चन में ना, we don't even have to pick up the pen. Selling price of one book you take as 1 rupee. Selling price of one pencil is 1 rupee. So what is going to be selling price of 100 rupees? Can we do the mental calculation? Yes. So कितने का बेचा? 100 rupees का बेचा. A shopkeeper is gaining selling price of 20. So gaining is what? Profit. Profit is equal to selling price of 20 pencils. So मेरे को जो profit हुआ वो 20 rupees का हुआ. Do you understand this? What did I say? My selling price is 100 rupees. My profit is 20 rupees.
Obviously my cost price is going to be how much? 80 rupees. Did you understand this? And if cost price is going to be 80 rupees, what is going to be a problem is asking you what is going to be gain percent or profit percent. How do you find out profit percent? You learn that profit कहाँ पे calculate करोगे? CP पे 20 rupees का profit हुआ. What is the cost price? 80 rupees into 100. What do you think is the answer? Isn't it 25%? Isn't it 25? And isn't it very simple to solve this problem? Isn't it very simple to solve this problem? Vishal, Tarun, Muskan, Rahul, please let me know if you're understanding this. मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हमने प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ था. चलो, if you're understanding this, go ahead and solve this problem. Not this first. Solve this problem. Okay. Tell me what is the answer. And this can be asked in the examination. What do you think is the answer? What do you think is the answer, people? I hope that you understand what is AB formula. I just want you to apply AB formula out here. Priyanka, yes. Previous problem, the answer was 25. These are the problems, I call them trap. Since you're pretty confident that you know this, आप जल्दबाजी में गड़बड़ करके आते हो. जो गड़बड़ संदर्भ और आराधना और तरुण कर रहे हैं, ये सारी गलती आप लोग कर रहे हो. And 90% of the people are going to make this terrible and very simple mistake in the examination. Muskan is getting the right answer. Rahul is getting the right answer. Darshana, you're absolutely right when you're writing this equation. And since none of the options are your answer, तो Darshana, you're absolutely right. It has to be D, because problem says discount है ना भाई. पहले होगा minus P, दूसरा वाला भी क्या होगा? minus Q, and then you have got minus P into minus Q upon 100. So what is this? Minus P minus Q, and this is going to be plus PQ upon 100. बता दो ना, कोई ऑप्शन है क्या इसमें से? ना तो ये होगा. Why first is not right? Because now you understand why this is not right. P and Q in the second one are positive and negative, so both of them are negative. So this is C is not answer. If one is not answer, this is not answer. What is going to be the answer? D is going to be the answer. And I say this, people will make this mistake. Chalo, since you're understanding this thing, go ahead and solve this problem. Use the AB formula. Use the AB formula. And what is that I'm trying to say? Profit loss कुछ होता नहीं है. आपने परसेंटेज ढंग से समझ लिया ना, प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा. कॉमन सेंसिकली अगर आपको ये समझ में आता है कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हो, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हो, डिस्काउंट क्या होता है, how do you calculate profit percent and loss percent, then you can sell very easily. Go ahead and simplify this problem.
I hope that you can find out what is the cost price. It is 250. It is 250 is the cost price. ये तो हमारे को पहले वाले सिचुएशन से पता चल ही जाएगा. And then there is a what is the problem? If you have a discount of 10% and 10%, so collectively what is going to be total discount percentage? Is it going to be 19%? Can you apply AB formula? Yes. Minus 10 करेंगे A, B, and then AB upon 100. Simplify कर दो. What is the total discount? 19%. And what is discount? Discount किस पे दोगे आप? 300 rupees पे दोगे. So 19% of 300. So 19 upon 100 into 300, which is coming out as 57 rupees का discount दोगे. And if you do so, 300 minus 57, it is 243. घाटा हो गया उसको, यही है ना भाई. 250 rupees is the cost price. बेच दिया कितने का? 243 का बेच दिया. So there is a loss. Loss कितना? Loss percentage is equal to loss 7 rupees का. What is the cost price? 250 into 100. This is 2, this is 5. 14 by 5, which is 2.8% loss. क्या ये बात समझ में आई हमारे को? Vishal, you're getting the right answer, but no, loss of 7. Vishal, you're getting the right answer. Hello Saida, how are you doing? Where were you today? So loss of 7 rupees onto 250 rupees, and if you have to find out what is going to be loss percentage, loss which is 7 upon cost price, which is 250 into 100. Do we understand this thing? Do we understand this thing? Vishal, did you understand the mistake? Muskan, did you understand your mistake? Chalo ji. I suppose that you would not pick up your pen now. Now you understand how should we simplify this. आपने ये problem अभी class में किया था. What is the value, people? Tell me. What is the value? Make it fast. Saida, were you aware of the timing of the class today? What is the answer? What is the answer? Rohan is getting the right answer. Who else is getting the right answer? Abhi, Yogmani, how are you doing today? Yogmani का पहला ये comment है. Darshana, you're getting the right answer. Vishal is getting the right answer. Muskan, no. Ankit, you're getting the right answer. देखो ना भाई, कॉमन सेंस से लगाने की कोशिश करते हैं. मान लो 100 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट हुआ 20 का 80 रुपीज हो गया, ये है ना. दूसरा डिस्काउंट इज ऑन टू 80 रुपीज, विच इज कमिंग आउट एज व्हाट? You did it, the problem, right? 64 rupees. And then you're getting further discount of 20%. So 20% of 64, which is what? 1/5 of 64. 64 by 5, which is 12.8. 12.8 का डिस्काउंट दे दोगे, कितने का हो जाएगा? 51.2 रुपीज का हो जाएगा. भाई यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्काउंट कितना हुआ? 100 minus 51.20, which is what? 48.80 रुपीज का. और व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज के टर्म पे भी तो 48.8 आ गया ना. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? एक तो ये भाई, मुस्कान कह रही है हमारा डी कैसे. मुस्कान, अब मैं कैसे बताऊं आपका डी कैसे? आप बताओ मेरे को. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा, जो आपने अभी अभी क्या सीख के रखा था, आपने क्या सीख के रखा है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर दो. द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेजेस. अगर हमने उसको यूज किया यहाँ पे, रुक जाओ भाई, 100 रुपीज प्राइस मान लो ना भाई.
every time you're giving a discount of 20%, you are left with 80%. 80% is what? 4/5. तो कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे 4/5? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. बट आपको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए दैट अगर आपने ये किया तो ये मिलेगा 51.20 रुपीज, बट दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू. तो डिस्काउंट कितने से हो जाएगा? 100 माइनस दिस वैल्यू. अगर प्रॉब्लम आपको ये बोल दे कि डिस्काउंट पहले हुआ 10%, फिर हुआ 20%, फिर हुआ 30%, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्काउंट? देखो ना, मैं लूंगा 100 रुपीज, पहले डिस्काउंट 10% का तो 90/100, फिर डिस्काउंट हो गया 20% का विच इज 80/100, फिर डिस्काउंट हो गया 30% का 70/100. डोंट यू थिंक दैट ये सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा, परसेंटेज तो खत्म हो गया ना यार यहाँ पे. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस. सो आइदर दे आर द सेम वैल्यूज or they are the different values. Now you're equipped enough to understand how should we simplify this. Go ahead and try to solve this problem out here. Now this was asked in CSAT 2020. Go ahead and try to simplify this problem. मुस्कान मैडम, आपने अगर 20 हर बार यही होता ओरिजिनल वैल्यू का, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलेगा ना भाई. ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार आपको ओरिजिनल वैल्यू पे मिलेगा. तो आपके हिसाब से मुस्कान जी, जब भी कोई दुकान 50% प्लस 50% डिस्काउंट ऑफर करती है, फिर तो 100% डिस्काउंट हो गया, फ्री में लेके आओ उससे सामान. यही है ना. और अगर गलती से कोई शॉपकीपर आपको 60% प्लस 60% डिस्काउंट दे दे, तो इसका मतलब मालूम है क्या हो गया? आप एक तो वो फ्री देगा, फिर आपको पैसे भी देगा घर आने के. ये लो रास्ते में चॉकलेट खाते हुए और ऑटो का और कैब का पैसा लेके जाओ. इट इज ऑलवेज सक्सेसिव. इट इज ऑलवेज सक्सेसिव. Bought the car and sold it for 3 lakh. If he incurred a loss of 20%, how much he spent? It's a pretty simple problem, right? Priyanka is getting D, Darshana is getting D, Rohan is getting D, Vishal is getting D. So when somebody was asking what kind of problems that you might expect in CSAT examination, more or less यही है, सिमिलर लाइन पे प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे. तो ये मिल जाए तो इनको तो आपको छोड़ना नहीं है. लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20% शुड बी ऑन टू द कॉस्ट प्राइस. यही है ना भाई. अब 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस तो बनेगा कितना? 80% सीपी का. 80% ऑफ सीपी is given to you as 3 lakhs. So it is 4/5 of CP is equal to 3 lakhs. मैं तो 3 lakhs ही लिखूं, इतने जीरो कहाँ मैनेज करूँ मैं. So CP is going to be what? 15/4, which is 3.75, not 3 points. क्या हो गया? Did I make a mistake? 5 3 15 divided by 4. हाँ, 3.75 lakhs. 3.75 lakhs कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है. मैं कह रहा हूँ आप अपना टाइम वेस्ट मत करना इस लाइन को लिखने में. ये आपको समझ में आना चाहिए. Is that okay? All right then. All right. This was again asked in CSAT 2020. Let us see if we can simplify this problem. Do it. Make it fast. शिवानी, I am not getting answer from you. शिवानी, बहुत देर हो गया शिवानी को आंसर किए. सईदा को बहुत देर हो गया आंसर किए. Saida, did you get the last problem? Saida, Shivani, and Prisha. How about you guys? Did you get the last problem? How about the new student today, Vishal? Did you understand? Oh, Vishal answered already. Okay, I'm confused then. I thought this is Ankit. एक तो ना बच्चे लोग नाम अपना अपना रखो. मेरे को जब भी कोई तो वो क्या तरुण का कुछ और नाम आता है, वो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता है. डोंट डू दिस.
मैं तो प्रॉब्लम सिंपल, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी ने बी बोला ना, सबने बी बोल दिया क्या? डी, शिवानी इज गेटिंग डी, प्रियंका इज गेटिंग बी, विशाल इज गेटिंग बी, रोहन इज गेटिंग बी। फोर्टी इज द राइट आंसर। 6 किलोग्राम लेस पर, आप ऐसे देख लो ना, मैं तो ऑप्शन ही एलिमिनेट कर देता हूँ। चलो ऐसे कर लेते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस मान लो 30 है, 40 है, 50 है और 60 रुपीज पर केजी है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वांटिटी? 1200 upon 30 which is 40, 30 and 24 and then 20, these many kilograms, यही है ना? 6 किलोग्राम लेस, प्राइस बढ़ गया 25% से, तो 25, सो व्हाट इज न्यू प्राइस? क्या ये ज्यादा मेहनत भरा काम हो गया? लेट अस सी, सिंस आई स्टार्टेड। सो व्हाट इज 25% ऑफ दिस वैल्यू? 25% इज, एंड देन 25% इसका निकालेंगे तो आसान है, इट इज 50। 50 में अगर खरीदा तो इसका 25% डेसिमल में आ गया, इसको 25% आ गया 75, है ना? सो क्वांटिटी 1200 अपॉन 50 विच इज 24, यही तो आंसर है, 6 किलोग्राम लेस, राइट? मैंने क्या किया, मैं तो सिंपल ये बोला भाई देखो, ओरिजिनल प्राइस अगर आपने ली 30 रुपीज पर किलोग्राम, 40 रुपीज पर किलोग्राम, 50 रुपीज पर किलोग्राम एंड 60 रुपीज पर किलोग्राम, देन आपकी जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? क्वांटिटी विल बी व्हाट? क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 1200 अपॉन द प्राइस पर केजी। पर केजी प्राइस आपको ये दे के रखा हुआ है। सो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 40, चारों ऑप्शंस मैंने निकाल दिए, ये 40 एंड देन 30 एंड देन 24 एंड देन 20, इतना केजी मेरे को मिलेगा। फिर उसने बोला कि प्राइस को बढ़ा दिया, कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 25% से। 30 का 25% कितना होगा? 7.5, बढ़ाएंगे तो 37.5, बट इट विल गिव यू आंसर इन डेसिमल। प्रॉब्लम खराब हो गया, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन तो नहीं है। 40 का 25% 10, तो मैंने क्या लिखा? ये न्यू प्राइस इज गोइंग टू बी 50 रुपीज पर किलोग्राम। सो 50 का अगर आपने निकाला तो 50 का 25% इज 12.5, ये आंसर नहीं हो सकता। So 60 or 25% is going to be 15. 15 plus 60 is 75. So दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। अब what is going to be the quantity? 1200 upon this option 50. Now if you simplify, this is 24. 6 किलो कम मिल गया ना यार, काम खत्म हो गया। पहले आप कितना लेते थे? पहले आपको 30 kg मिलता था, अभी 24 kg मिलता है। प्रॉब्लम के हिसाब से यही ऑप्शन हो गया, काम खत्म। आर वी क्लियर विद दिस? तो ऑप्शन से भी कर लो आप। Okay, then this is what we had in profit and loss. I am assuming that if you have clarity onto percentages and the basics of profit and loss, you can very easily simplify this. Now go in the comment section if you're comfortable about number 1, percentage में आपने एक तो सीखा AB फॉर्मूला, वो कहां पे यूज करोगे आप? सिर्फ जहां पे दो चेंजेस होंगी वहीं पे यूज करोगे। देन यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। इससे भी आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, बट आपके एग्जामिनेशन में अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपल वैल्यूज असाइन करी जाएंगी और प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से लगा दोगे। थर्ड, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ इलेक्शन प्रॉब्लम्स, कि कितने लोग जीता, कितने लोग हारा। नाउ सिंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, आप यहाँ से निकाल दोगे। देन वो जो हमने रेशियो प्रॉब्लम किया था कि कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई 2-3 प्रॉब्लम आपको निकल के आएगा। आप अगर ये 4 वैरायटी अगर आपने समझ के रखी है, देन रेशियो बाइफर्केशन you can very easily simplify. And then fifth, one question from profit and loss. So what is that I am trying to tell you? I'm trying to tell you that you can very easily expect 4 to 5 questions from this entire thing.
और अगर आपके पास में आजकल 40 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है क्वांट से, तभी तो पेपर डिफिकल्ट हो गया ना भाई। If out of 80 questions you are getting 40 questions from the quant section, and out of that majority of the questions are being asked from only two sections, which is what? Number system and your arithmetic. Number system, concept of zeros, you can expect a problem. Divisibility rule, you can expect a problem. Then there are problems like digits. We might have done this, a 2-digit number when it is reversed, you can expect a problem. Then you can expect a problem from the concept of last digit, then from the remainder theorem, then from properties of numbers. So इन सबको मिला के you can expect very easily 10 questions, है ना। 10 questions आप वहां से expect करो। बाकी के जो आप questions है कम से कम 20 to 25 आप expect करो arithmetic से। Out of those 20-25 problems, what is that? That's my gut feeling based on what has been happening for last 4-5 years. Out of this, you can expect 3-4-5 problems. Is that okay? Now, should we move ahead and understand the calendar problems? Let us. Calendar problem कितना देगा? Clocks and calendar. What is that I am trying to tell you? पिछले हर साल जब से पेपर डिफिकल्ट हुआ है, one question is guaranteed from quant and one question from calendar. तो clock and calendar मिला के आपको 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। तो या तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, नथिंग मोर नथिंग लेस। हाँ, मुस्कान सेज आज के लिए काफी हो गया। हाउ अबाउट रेस्ट ऑफ यू? हाउ अबाउट रेस्ट ऑफ यू? Can we take this class ahead for 15 minutes, 15 more minutes? दर्शना कह रही है कैरी ऑन कर लो। अरे मुस्कान मैडम नेट वेट लेके बैठो, नेट भी मैं भरा दूं आप पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ तो फ्री कर दिया बेटे। तो बताओ, नंबर दो, मैं इंटरनेट भरवा देता हूं आपका। और क्या करूं मैं आपके लिए? कह रही इंटरनेट खत्म हो गया। देखो थोड़ा सा करते हैं, लेट मी स्ट्रेच फॉर 10-15 मिनट्स। मेरा क्या ही है यार, बताओ मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे। नॉर्मल ईयर हैज गॉट 365 डेज, you're fine with that। 365 डेज हर एक नॉर्मल ईयर में होता है, एंड दिस इज व्हाट यू नो। A leap year has got 366 days, and if you so this is how we are finding out one extra day. Do you understand this? 52 weeks plus 1 extra day, and 52 weeks plus 2 extra day. बच्चे भी ना कभी कभी बड़े डिमांडिंग होते हैं, बड़े फनी होते हैं बच्चे। एक तो पूछता है मेरे से कि आके कि सर खर्चे वर्चे कैसे चलते हैं आपके, ये यूट्यूब क्लास से तो नहीं होता होगा। मैं कहा हाँ, ये इसमें से तो नहीं होता है। तो कहता है फिर चलाते कैसे हो आप, महीने का कमाते कैसे हो? मैं कहा मैं बता दूं तुम्हारे को? कह रहा हाँ सर बताओ, मैं सारी प्रॉब्लम आपकी सिंप्लीफाई कर दूंगा। ऐसे तो कॉन्फिडेंट लोग घूम रहे हैं मार्केट में। तो दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ कहाँ काम करता हूँ। सॉरी। एक तो कभी कभी ना क्लास में वो वाले स्टूडेंट देखे होंगे ना, वो आपसे पूछेगा सर व्हाट इज योर पर आवर सैलरी। तो पर आवर सैलरी से कहीं ना कहीं से वो अजम्पशन निकालेगा, फैकल्टी तो बताएगा नहीं आपको। उसके वजह से बोला अच्छा ये रोज ना 8 घंटे पढ़ाता है, महीने में 30 दिन पढ़ाता है, इतने पैसे कमाता है। तो अरे हाँ, ये जम्मू में पूछता था, मैं जम्मू में पढ़ाने गया था, पूछ लिया मेरे से डायरेक्टली, सर इतने पैसे कमाते हो, आपकी कार कहाँ पे है? मैं कहा यार ये क्या बात हो गई। And just to tell you this, मैं ना ये this is my way of giving back to my students. My students, this is my interpretation. एक
जो बच्चे पिछले साल कहीं ना कहीं पढ़ाई करके आए हो, क्योंकि आप सारे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में फंसे हुए हो, यही है ना भाई, तो आपने किसी कोचिंग को ऑलरेडी पैसा दे दिया हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं, क्योंकि सीसैट डिफिकल्ट होता जा रहा है एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स, मे बी मैं किसी को इनवाइट भी करूंगा जो बेचारा फेल हो गया, उसको क्या ही इनवाइट करूं, बट देन वो पेपर 1 में कई सारे बच्चे पास हुए पिछले साल, और वो पेपर 2 में फेल हो गए। अब आगे वो मेरे पास रोएगा तो भी मेरे पास कोई सोल्यूशन तो होता नहीं उस बात का, बट मैं सांत्वना ही दे सकता हूँ, बट मेरे को पता है ये बच्चा लास्ट अगले अगले 365 डेज कैसा फील करने वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये जो पेपर 1 में अच्छा कर रहे हैं, इनके लिए 40 आवर्स 50 आवर्स का कुछ ना कुछ ऐसा कर दो ताकि इनको दूसरे कोचिंग में पैसा ना देना पड़े और इनका काम चल जाए, साथ में कोई नया वाला बच्चा आ जाए तो उसका भी काम चल जाए। हाँ मेनी इफ यू एग्री विथ मी कि बार बार पैसे क्यों देना है किसी को। चलो जी, लेकिन हाँ जब आप सिलेक्ट हो जाना ना, तो फिर मेरे कुछ काम करने, फिर आप फिर आप मेरे काम करोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय ROI फ्रॉम यू। ऑल राइट देन, इफ आई से दैट 1st of January, अंडरस्टैंड दिस, 1st of January 2001 इज संडे, ठीक है जी। व्हाट इज गोइंग टू बी 1st of January 2002? And you know how to find out leap year? A year is a leap provided it is divisible by 4, and you know how to check the divisibility rule? Last 2 digit देखो, अगर वो 4 का multiple है तो it is a leap year, then it is having 366 days, then it is having, in February it is having 29 days, isn't it? And if it is a normal year, it is not divisible by 4, और February में सिर्फ 28 होगा। Is it going to be Monday? Most of you are saying Monday, क्योंकि ये हुआ क्या, it is going to be 365 days। देखो ना बच्चे, 365 डेज का मतलब कितना हुआ, 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। सो 52 वीक्स का मतलब एवरी डे, संडे से शुरू करोगे तो संडे टू संडे 1 वीक, देन अगेन संडे 2 वीक्स, देन अगेन संडे 3 वीक्स, अगेन 52 वीक्स बीत गया, वापस आप संडे पे प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, यू आर ऑन टू द मंडे। यही हुआ ना, तो ये जो होगा ये मंडे हो गया। बट व्हाट वुड हैव बीन अ बेटर प्रॉब्लम हियर? द बेटर प्रॉब्लम वुड हैव बीन what was the day of the week on 31st of December 2001? What do you think it is? What do you think it is? Almost everybody has got the right answer. My question is what is the day of week on 31st of December on the same year? On the same year. अब एक दिन पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक दिन पहले it is nothing but Sunday. It is nothing but Sunday. So can I say that the first and the last day of any normal year will be the same? If the calendar starts with Monday, it will end with Monday. If it is starting with Tuesday, it is gonna end with Tuesday. Does this make sense to you? यानी पहला वाला जो होगा वही आखिरी होगा। And if 1st of January 2003 is equal to Monday 2004, मान लो ये अगर मंडे है, ठीक है जी, तो what is going to be on 31st of December 2004? Tell me what is the answer. Tell me what is the answer. What is the answer out here? No, it is still Monday. It is still Monday. Don't go for Wednesday. 31st of December 2000। देखो यही कहने की बात है ना, ये दिखने में सिंपल सा लगता है बट ये है नहीं इतना।
So can I say that 1st of Jan 2005, will it be Monday plus 2 दिन extra? No, I made a mistake, I guess. 2 days extra, it is going to be Wednesday. यही हुआ ना? और Wednesday के एक दिन पहले ये क्या बनेगा? Tuesday. क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने लीप ईयर लिखा है भाई, तो अगर लीप ईयर से अगर आप मंडे से जाओगे तो ये हो जाएगा वेंसडे, और 31st ऑफ दिसंबर अगर आपको निकालना है विच इज द लास्ट डे, तो विच इज 1 day प्रायर, will it become Tuesday? Will it become Tuesday? I am not asking you what is going to be 1st January 2005, rather I am asking you what is going to be day on 31st of December 2004. Will it be Tuesday, Aradhana? And how about rest of you? How about rest of you? अगर प्रॉब्लम में ये पूछा जाए क्या ये बात सबको समझ में आई? If I say 15th July 2003 is Monday, ठीक है जी. What is going to be day on 15th of July 2004? Tell me what is the answer. Yes, Rohan, 1st of January will be Wednesday, but what is that I'm asking you? 31st of December 2004. And if 15th, so that's your problem number 1. Take the other problem. It is Friday. What is the answer, people? Everybody saying Tuesday? Everybody saying Tuesday? 2003 से 2004 तक जाओगे. Rohan says Wednesday. It is not Tuesday. Please understand. Do not get bogged down by 2003. आप ये बोलो कि भाई ये तो नॉर्मल है तो एक दिन आगे बढ़ेगा. Understand this. When you go from here to here, 15th July to you're coming to 15th of July 2004, and 2004 is a leap year. And if it is a leap year, in February it will be having 29 days, right? तो आप क्या करोगे, ये कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ेगा. आपको बस इतना ही देखना है कि लीप ईयर का जो 29th है वो आपके कैलकुलेशन में आ रहा है या आपके कैलकुलेशन में नहीं आ रहा. इफ इट इज देयर इन योर कैलकुलेशन, इट इज गोइंग टू बी 2 days. तो यहां से यहां जब आओगे, इट विल बी वेडनेसडे, इट विल नॉट बी ट्यूसडे. Yes, Saida, you got the right answer. All the time you will look at not at this number, rather from here to here. What is that you have to see? Whether you are getting 29th of February or not. What is going to be the answer of this problem? Now you understand what is the answer out here. What is the answer? It is going to be Sunday for the first for the second one. So those of you who are saying problem number 2, the answer is Sunday, you guys are getting the right answer, because 2016 is a leap year, and if it is a leap year, 29th is going to be there, और वो आपका कैलकुलेशन में ऐड होगा, और it is going to be going ahead by 2 days, not by 1 day. हाँ, yes Muskan ji, yes. Solve the third problem. Third is a different variety.
बताओ जी, व्हाट इज द आंसर पीपल? व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट थर्ड प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एवरीबडी सेइंग संडे. कैसे? How do I solve these kind of problems? I have got a very simple way. So those of you who still are doing the manual calculation, please look at the board. You do not need to put a lot of efforts to simplify these kind of problems. करना क्या है हमारे को, ये देख लो आप. 13th of January. तो 13 जनवरी तो ऑलरेडी चला गया. How many days we are left with in January? जनवरी में बचा कितना हमारे पास? We are left with 18 days. Do you understand this? 13 के बाद, because January has got a total of 31 days, we will be left with 18 days. अब आप 18 के लिए क्या करोगे? 18 को ऐसा कर दो कि 7 से डिवाइड कर दो. कैन यू से 2 weeks plus 4 एक्स्ट्रा डे. तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा डे पे कॉन्सेंट्रेट करोगे. 14 plus 4, so 14 का मतलब 2 weeks. 2 weeks का मतलब वीक के सारे दिन दो बार तो आ ही रहे. So they would not be helping you a lot. Then after January you have got February. February पूरा का पूरा बीत रहा है, तो आप क्या करोगे? 0 एक्स्ट्रा डेज. February के बाद you have got March. March 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 weeks plus 3 एक्स्ट्रा डे. तो मार्च के मैंने लिखा 3. अप्रैल का क्या लिखेंगे? अप्रैल हैज गॉट 2 days, sorry 30 days. So 30 is going to be this. And then अप्रैल के बाद मई आएगा. मई, नाउ यू नो 3. मई के बाद जून बीता. जून गोइंग टू बी 2. अब आया जुलाई. 31st of जुलाई आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. अंडरस्टैंड दिस. 31st जुलाई पूछ रहे हो, तो 31st को छोड़ के जुलाई में 31st को पूरा इंक्लूड कर लो आप, क्योंकि 30 जुलाई का मतलब कितना? 31 डिवाइडेड बाई 7, इट इज 3. अब आपने इन सबको ऐड कर दो. 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 3 12, 14 17. 17 को आप क्या कर दो? 7 से डिवाइड कर दो फर्दर. तो इट इज गोइंग टू बी 2 weeks plus 3 एक्स्ट्रा डेज. सो कैलेंडर इज गोइंग टू बी मूविंग अहेड बाय 3 days. सिंपल, नथिंग एल्स. बकुल जय हिंद. बट आप थे कहां भाई आज? So what is that I'm trying to say? The calendar will be moving ahead by 3 extra days. Friday से 3 दिन आगे जाओगे तो क्या निकल के आएगा? मंडे निकल के आएगा. कितने लोगों का आंसर मंडे आया था पहले वाले में? कोई मंडे वाला है यहाँ पे? Anybody for Monday? But are you understanding why the answer is going to be Monday? What did I say? जनवरी काउंट किया, फरवरी काउंट किया, मार्च काउंट किया, अप्रैल काउंट किया. शुरू के 2-3 प्रॉब्लम में लग सकता है काउंटिंग में समय, but then over a period of time it is going to be way too simple. April and then May and then June and then July. Add them up. Your answer is 17. 7 9 12 plus 5 17, right? And if you understand this, go ahead and solve this problem. Fourth, if you're understanding this, सबका संडे आया था तो सबका गलत था. let me see again. July, 31st July. So entire 31st will be over. 4 3 2. Yeah, I'm right. Did we understand everybody? Saida, Kunjan, Darshana, Aradhana, Tarun, Rahul, Rohan, Bakul. Are you convinced that the answer should be Monday? And if you understand this, go ahead and simplify the fourth problem. Do it. बट आपको करना क्या है? बस यही पे ना, जैसे 18 जुलाई बोल रहा है ना, 18 के बाद से काउंटिंग शुरू करो, क्योंकि 18 को तो ऑलरेडी फ्राइडे हो चुका है. स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर द डे, द फर्स्ट डे. सो द वे आई वुड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम, इट इज गोइंग टू बी दिस कलर. आज किसने ये सेट किया है? इसको गड़बड़ सेट किया है. जुलाई शुड बी 12 plus 1 13 is 6. July. September 2. October 3. November 2. And December पूरा का पूरा लूंगा, which is 2. So 6 to 8
8 3 11 11 which is 1. Calendar will go ahead by 1 day which is Friday के बाद ये क्या आएगा? It is going to be Saturday. बनी बात भाई? Did I make a mistake? July? Oh हाँ. I should have added. Yes, thank you so much. July, then August का ही add लेते हैं ना 3. 15 3 18 का मतलब 4. Calendar will go ahead by 4 days. Friday and then Tuesday. It is going to be Tuesday. Saida, thank you. Yes, I made a mistake. July, August, September, October, November and December. So in total, the addition should be 18. दिसंबर में 3 होगा. दिसंबर में 3 कैसे होगा? दिसंबर में 9 है ना. We have to include all of it. So 7 से जब 9 को डिवाइड करेंगे, so answer will be what? The remainder will be 2. You have to include that too, no? Rohan, did you understand this? So it has to go ahead by 4 days, not by 3 days. One last problem of the day and then we are done. This last problem. Do it and we will continue with our discussion tomorrow about calendars. Tuesday. Darshana, you got the right answer. Rohan, you're getting the right answer. Priyanka, yeah, Priyanka, everybody. I made a mistake. How about, do we have Prisha still here in the class? And the other student who joined today? मैं ना नए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कंसर्न होता हूँ. 1 दिन 2 दिन. आपसे नवंबर पूछ के जुलाई पूछ रहा है वो. Are you getting this 3? अब ये आप यहां से यहां जाते तो 3 दिन आगे जाते. अब आपको यहां से यहां वापस आना तो 3 दिन पीछे आ जाओ. 3 दिन पीछे आने का मतलब कितना हो गया? 3 दिन पीछे आओगे तो ये आपका बन गया संडे. काम खत्म हो गया आपका. Number has to be 5. Yes, number is 5. All of them are correct. Are we understanding this method, people? Are we understanding this method? Thank you very much for being patient. क्लास आपकी थोड़ी सी आज लंबी चली गई. Okay then. Yes. So thank you very much. I'm gonna see you tomorrow. And if there will ever be any cancellation, I will very specifically be telling you in the group. और बाकी जब तक मैं नहीं बोलूं आप किसी और की क्लास का कैंसलेशन बिल्कुल यहाँ पे मत लगाइएगा. ये क्लास बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे ये चल रही है. सैटरडे संडे 7 to 9 PM, right? So go in the comment section and let me know if you have understood this. What is your feedback for today's class? Anything that you want me to improve upon? Anything that you would like to add upon? हाँ जी, क्या है आपकी कहानी आज की? क्या आपको ये सब समझ में आया? या आप तो 2 घंटे सैटरडे संडे को आप बहादुर बच्चे हो. आप शाम को जब सैटरडे संडे लोग बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, आप क्लास में बैठे हो मेरी, और ये फ्री क्लास है जिसको आप छोड़ के जा सकते हो. आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, समझ रहे हो ना? आपने पे किया होता तो फिर होता यार चलो, आप फिर भी यहाँ बैठो. दैट मीन्स आई कैन टेल यू कि आप सीखना चाहते हो.
और जो सीखना चाहता है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। चलो जी, तो ये तो है। चलो गिव मी वन लाइनर फीडबैक पीपल। दर्शना बच्चे देखो, मैंने 40 क्वेश्चंस आपको, आई हैव हायर्ड अ पर्सन, आई डिड नॉट टेल यू दिस, आई हैव हायर्ड अ पर्सन, इन फैक्ट फॉर दिस फ्री सेटअप आई हैव गॉट 3-4 पर्सन्स नाउ। एक जो मेरे सामने बैठे हुए भाई साहब वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, दूसरा आई हैव हायर्ड अ राइटर, क्योंकि मेरे को खुद क्वेश्चन टाइप करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, मैं दूसरों को बोल नहीं सकता, तो I have done this. So every week probably you will be getting 150 to 200 questions and I'm going to make it a possibility, I cannot commit this now, कि आपको जो solution है ना वो भी solution उसी के साथ में hand written solution मिल जाए। So that's how next week ये देखा जा सकता है कि जितने भी topic अभी तक आपने किए ना 50-50 questions each of those topics plus solution will also be there. Is that okay? तो ये हो जाएगा। Next week onwards you will be getting plenty of questions. Chalo, I'm gonna let us call it a day. I'm gonna see you tomorrow. Okay, 7 पे। Vishal, will you be there? Vishal, will you be there tomorrow? Thank you very much people, thank you Kunjan, thank you Rohan. Suresh, I did not get many messages from you today. What is that? I hope you're fine. Okay Priyanka, okay Tarun, Vishal, okay. Okay then, okay, take care people, take care. The only thing that I have got, please invite more of your friends. I just want to reach out to as many students as I can.